So, hello everyone. Welcome to platform of Unacademy and welcome to session of the NITIE Mock Interviews for the 2023 and which are going held very soon in the just upcoming days of April. And this interview is one of the most important part of any chemical engineer which is willing to join the NITIE for the course of PGDI and PGDIM. And ये जो बेटा आपका इंटरव्यूज होने वाले हैं आपके नीटी के लिए, तो इसके अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं। रीजन ये है कि अभी लगभग इस साल से पहले लोगों के लिए नीटी के प्रति जागरूकता थोड़ी सी कम थी, बिकॉज दे आर नॉट टू मच अवेयर अबाउट द नीटी एंड द पैकेज दैट ऑफर द नीटी फ्रॉम द प्लेसमेंट। लेकिन अभी आपके पास में इतना ज़्यादा जो है ना मोटिवेशन मिल चुका है कि इस बार काफ़ी सारे हमारे कैंपेन के स्टूडेंट्स जो है ना वो नीटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो आज हमारे साथ में जो भी हमारे स्टूडेंट जो कि नीटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं
वो सारे हमारे पैनल पर हैं, ठीक है, मॉक इंटरव्यू के लिए। एंड वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट फ्रॉम द नीति मुंबई, दैट इज तुलसी पाटले, इज ऑल्सो हियर एज अ पैनलिस्ट फॉर द नीति मॉक इंटरव्यूज। सो आज आपको वो फील आने वाला है कि एक्चुअली नीति, अगर आप मुंबई के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाएंगे, एंड उन क्वेश्चंस को कैसे टेक्निकली आपको टैकल करना है, कैसे लॉजिकली उनका आंसर करना है, जिससे कि जो भी आपके पैनलिस्ट हैं दैट विल गेट इम्प्रेस्ड, और वहाँ से आपका सिलेक्शन जो है ना वो 100% एश्योर हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, तो पहला काम आपको ये करना है कि इन फ्यूचर अगर आप नीट मुंबई के इंटरव्यू देने के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर यू आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अगर हैं, एंड डेफिनेटली यू हैव इंटरेस्ट फॉर द नीट मुंबई बिकॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग पैकेज सिलेक्शंस आपको जो है ना नीट मुंबई से हो सकते हैं, मोर देन एनी PSUs, डेफिनेटली यू कैन मूव फॉर द नीट मुंबई। तो अभी आपके पास में ये ऑप्शंस भी बहुत सारे ओपन होने वाले हैं। और जो एक आपका मिथ चल रहा था कि नेक्स्ट ईयर से जो एडमिशंस हैं वो गेट के थ्रू होंगे या नहीं होंगे, तो ऑलरेडी हम लोगों ने तुलसी के साथ मिलकर के एक सेशन लिया था और वहाँ पर ये चीज़ हम लोग डिस्कस भी किया था कि डेफिनेटली यू विल हैव चांसेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑल्सो फॉर द गेट 24 ऑल्सो फॉर द नीट एडमिशंस, एंड आपके पास नेक्स्ट ईयर भी चांसेस रहने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको ये सेशन जो है ना बहुत ही हेल्प करने वाला है। रीज़न ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो अभी जैसे आपके लिए नीट एडमिशंस के लिए जो एक अवेयरनेस आई है, सेम आपके लिए नीट के इंटरव्यू देने के लिए एज अ केमिकल इंजीनियर जो है ना कैसे आपको टैकल करना है, ये अवेयरनेस भी आपके अंदर आने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुलसी, वेलकम इन द सेशन। Thank you, sir. And Ria, Ankish, and Rishika, first of all, congratulations for the shortlisted for the NITIE Bombay interviews. And Thank you. second thing, welcome in the session also, beta. तो गाइस, आज हम जो डिस्कस करने वाले, ये सेशन आप सभी के लिए इसलिए और भी हेल्पफुल होने वाला है कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो आप देखने वाले हैं और जो भी आपके अदर इंटरव्यू आप फेस करने वाले हैं, लाइक NPCIL, बार के फिर कोई भी अदर PSU का इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, इन दोनों पर्टिकुलरली फॉर्मेट में क्या डिफरेंस आपको मिलता है, एज अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं और एज अ PSU या फिर कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको फेस करने होते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और अगर आप एक केमिकल इंजीनियरिंग कोर ऑपरेशन से फिर मैनेजमेंट बैकग्राउंड से अगर हैं, आपके पास अगर कोई भी वर्क एक्स अगर है, तो वहाँ पर अपने क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे देना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आज इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है ना हम मिल करके देने वाले भी हैं और सुनने वाले भी हैं, ठीक है। सो वेलकम एवरीवन वंस अगेन। नहीं बेटा, हमें टेंशन मत लो, बिकॉज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नीटी अगर पूरा का पूरा अगर एडमिशन अगर कैट के थ्रू लेना स्टार्ट कर देगा, देन दिस पर्टिकुलर कोर्स PGDIM इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, एंड दिस इज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए कैट क्वालिफाई करना उतना टफ होता है बिकॉज दे प्रेफर द गेट एग्जाम। तो डेफिनेटली गेट के थ्रू आपके एडमिशन होते रहेंगे, ठीक है अमित। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द अंकिस एंड तुलसी पाटले, ओवर टू यू। Yeah. So, Ankish, first of all, very congratulations for the shortlist. And can you just a little bit brief about yourself? Introduce yourself. Myself Ankish, I am from Hazaribagh, Jharkhand. I have completed my matriculation and graduation from Dhyanand Anglo-Vedic Public School. After completing my graduation matriculation, I have taken 1 year drop for the preparation of but not able to get decent rank in J Advanced. But still I managed to qualify state level exam, and I have done my BTech from Birsa Institute of Technology in Chemical Engineering from 2K17 to 2K21. And my final year project was based on the theoretical analysis of the production of biogas using cordon from biogas plant. And after completing my BTech project, because during 2021 due to COVID, less core companies were came in my college, so I have not got placement in that year. So I thought for preparation for 1 more year of GATE, but that not came for the fruitful results. So I decided to take a job. So I applied in TCS and selected for TCS, and sidewise I have prepared for GATE also. So I got 311 rank in GATE, and I have also cracked various competitive examinations like GCEC, which is a state level exam, and got 899 rank. And I also cracked Indian Maritime University CET and got AIR 832 rank. Also, I got silver medal in NPTEL Chemical Reaction Engineering course conducted by IIT Kharagpur, and I also won the quiz competition held by Indian Institute of Chemical Engineering
at ISM Dhanbad. My hobby is I used to listen songs, traveling in homestay with my friend, do meditation, playing with my friends. And Okay, Ankesh. So, you are a chemical engineer, right? yes, Yeah. So, can you tell me like five advances which you see nowadays in chemical engineering field? You, as a management student, you should be aware about the advances which are going around related to your field. as a chemical engineering, our Hmm. main role is to convert the raw materials into a desired product with the help of various unit separation process such as unit process and unit operation in a optimized way. In optimized way means the best quality with minimum cost, and this skill is mostly required in our managerial role. Okay, you didn't get my question correctly, but it's okay. You just raised the point of operation unit and operation process, right? So, can you differentiate between these two? Unit process means there is requirement of chemical reaction, that is we study in chemical reaction engineering, in which we design a reactor. Designing a reactor means the type and size of reactant, and we optimize the pressure and temperature condition. And unit operation means various operations such as mass transfer, heat transfer, extraction, humidification, crystallization. Okay, can you justify on the basis of objective unit process and operations? For example, in manufacturing of urea, in Hmm? urea we use autoclave reactor. So in Hmm? designing autoclave reactor, we have to go through the basics of chemical reaction engineering, Hmm? and that's what. Ankes, there Okay. is one question from my side also. How unit process enhances or utilizes the cost of any product or decreases the cost of any product, and how this is beneficial as a chemical engineer or any plant operations or the optimization of particular process. यूनिट प्रोसेस जो है किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिशियल है? बस थिंक सोचो थोड़ा सा। यूनिट प्रोसेस से क्या बेनिफिट हो सकता है किसी प्लांट को? इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे हो सकता है? Definitely, we are using the unit processes means that involves the chemical reactions, and definitely the lots of petroleum industries which are using the unit process that actually saves the reaction time as well as the reaction temperature as well as the reaction process time and operations time, and the we enhances the conversion also with the help of the unit process. And definitely we are using the less inputs and try to maximize our outputs. That's the benefit of the unit process in the economy of the any particular process plant. Yes. Okay, so see, we can move over to the other also, and because we will put the same question from the, all these things, and they will Hmm. also get benefited from these questions also. Yes, Okay, yes, okay. sure. So moving with the Ria. So Ria, first of all, tell me something about yourself. Yeah. Good evening. My name is Riya Khambadkar. I'm basically from Nagpur. I'm born and brought up in Nagpur, and currently I am at Jamnagar. I have completed my B.Tech in chemical engineering from Lakshmi Narayan Institute of Technology, Nagpur, and I am currently working with Reliance Industries Limited at Jamnagar manufacturing site. Here I am placed as SFE, Chef Kill Engineer in SEZ polypropylene plant. So I look forward to these things. And my I have done my summer internship at BPCL Kochi Refinery, and I've done my winter internship at Manas Agro Limited. That was at Nagpur. So these were about my internships, and I have in extracurricular and co-curricular activities, I have presented a review paper on herbal cosmetics at national conference on recent trends in chemical engineering at LIT,
and I've also taken a green belt at Six Sigma. And my hobbies are singing and playing Casio. And I also feel like my strengths are communication skills and my professional ethics. Thank you. All right, Ria. You're Yeah. working in a refinery, right? Yes. Yeah. So can you name any five refinery processes and what are their outputs? Yeah, I can. In unit processes, right? In my Yeah, plant, yeah, refinery processes basically. I am at petrochemical site, not at refining. So in Hmm. my plant, I can tell you few. Like we have polymerization reaction there, crystallization too, drying. Hmm. Drying comes under operation. Sorry. So we Yeah. have polymerization, Hmm. uh, and we have also have in FCC we have catalytic reaction and delayed cooking in delayed cooker unit if coming to the refining side, and there are more few. I All right. cannot remember this right now. Okay. Okay. And can you just name any five chemicals which we are using in day-to-day life? Like, Yeah, we are using acetic acid vinegar, which is very common. We hmm. are using baking soda. We are Hmm. using washing soda too. We Hmm. are using toothpaste. Or Hmm. we are wearing clothes that are even fabrics made up of or polymers. And Okay. every other things that we use in day-to-day life is just chemistry, nothing else. So, Okay. Ria, you are Okay. Yeah. doing job in the So, do uh, you have any questions for petro Ria? petrochemical sector. So, actually, you are So doing you're job not in the audible. operations or in the management. Sorry, your mic is mute. Okay, okay, Hmm. just it was sorry about that. Actually, Yes. you are doing your job in the petrochemical sector. So, Yeah. you are doing your work in the management or the operations sector. Operations. I am at Operations. operations department. Yeah. Okay. So, if you are doing the job in the operations sector, then why you want to join that particularly management institute? Coming from an operation background, I want to become an operation techno manager who knows the operation side and could manage that as well. So, taking this background, I want to pursue my management in NITIE Mumbai. So, in point of view, what types of skill does a manager should have? A Mm, manager first should be a good listener. He should listen to his co-employees, his colleagues, and a level above to his hierarchy and even below to his hierarchy as well. So he should be a good listener, a good communicator. He should communicate well with his team. What are the tasks, what it needed to be done, and what are the inputs and outputs as well. The manager should have a good team spirit, should have good leadership qualities, and should take team as a whole and go forward, not as alone should dominate. I feel these are the five qualities that a manager should have. okay. So, Tulsi, we Okay, can Ria. move with I Uh, think Rishika also. Then we will put the can question I also ask now. one question to Risika? Yeah, Ria. Ria. Yes. Move forward. Yeah, Ria, you just said like you want from operations field to techno manager field. So, like, how do you think, like, if you'll become a manager, how your operations will be changed in your petrochemical plant? What will be If your roles and responsibility change, and what changes you can bring to that plant? Yeah, if I consider myself as a manager in the plant I'm currently working, so I Hmm. have seen my managers what they do. So they take inputs from our side, what have you done throughout the day, and then Hmm. they manage their work to bring out the best in throughout the plant, what they can do to improve the efficiency, to do the productivity, and Hmm. many things. So I feel like taking inputs from the operations and then managing all this is all needed to become a good techno manager. So my point was that like what value you can add. Like currently managers are doing their job. So what extra you can do if you'll become that manager? I could know if I'm working today at operations. I know what are the things that that are really needed to be managed. Hmm. So taking the education at NITI Mumbai,
and having this background of operation could totally come together for me to become a good techno manager. So basically, you are already having the experience in operations field. You will already know the processes. Yeah, So it will become the manager at that particular field. So you will be able to better uh, understand. anticipate the processes and what can be the risk to in the Yeah, plant. exactly. So that will be the added point if you will become a manager, right? Yeah. Yeah. So this is what they expect from you. So just be careful because Okay. they want you to add some value, right? Yeah. Okay, All right. let's move Thank with you. the Rishika also. Okay. Yeah, So Rishi. Rishika, first of all, tell me something about yourself. Firstly, thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Rishika. I'm basically from Patna, Bihar. I have done my schooling from Patna itself, and later on, I have done my B.Tech in Chemical Engineering from Indian Institute of Petroleum and Energy, Visakhapatnam. And presently, I'm pursuing my master's from IIT Harcourt, which will going to be end in 1 month. And I have done my summer training from IOCL Baroni, in which I have learned about various unit processes and operations, and how we'll get the final product and what are the major products in the oil refinery. And I have my BTech project is basically on thermal and hydraulic analysis of a spherically bound heat exchanger, in which I have observed the velocity and temperature profile using CFD, and I have designed the spherically wound heat exchanger also using SolidWorks. And my achievement is that I have qualified Cherry Advanced and GATE also. All right, And Rishika. Rishika, what is your M.Tech project? My M.Tech project is basically on biofuels, in which I am basically finding the nature of active sites of molybdenum carbide and molybdenum oxycarbide. As you all know that they are very costly metal for hydrodeoxygenation, like platinum and rhodium are the very costly metals, and so we are switching on to some cheaper metals like molybdenum carbide and molybdenum oxycarbide, and I'm studying the CO2 hydrodeoxygenation reactions over these catalysts. All right. Rishika, you are already doing your master's from IIT Kanpur, right? Yes. So why do you want to leave that and join NITIE? Like you already have one master degree, right? You'll complete it within 1 or 2 months. Yes, ma'am, I'll complete it. But this ma'am, MTech doesn't teach me the managerial skills, which and the supply chain management, which will I'll get this quality if I'll join NITI. So, ma'am, that's why I want to join NITI. You are not audible to me. Hello, am I Yeah, audible? yeah. Uh, may I repeat my answer? Yeah, I just want to know why do you want to join NITI? And basically, this MTech is basically provide me the technical background, not managerial skills. And after joining NITI, I'll get various exposure of how to manage in management sectors like supply chain management and finance management, marketing management, and productivity management, quality management. These type of these type of skills I'll get from NITI. That's why I want to join NITI. So Rishika, you want to Rishi, join managerial field. So basically, you are saying you have wasted your 2 years in IIT Kanpur. No, I didn't wasted my 2 years in IT Kanpur. I basically learned a lot, and I have various. I have organized various events like research holiday and all, and these skills are inculcated in me after joining IIT Kanpur. And I want to gain this managerial skills after joining NITI. That's why I want to join NITI, All which right. I'll not get in IT Kanpur. So, and DT is the best place, as I know, as you all know that DT ranked ninth among all the management institutes. All right. Rishika, your any two skills that should be added to the NITI Mumbai for the NITI Mumbai get benefited from your skills. Any two skills from your side that will Yes, be sir. get benefited in the at NITI Mumbai. आपकी कोई भी दो स्किल्स जिससे NITI Mumbai को फायदा होगा.
My skill is basically that I can grasp things easily, and and I'm a very hardworking person. So these are the two things. Okay, so do you think that the hardworking person can manage and economically get benefited any industry? Do you have any Mm, example or any yes, ideal person? there should be some smart work also and hard work also. Okay. Yes. So Rishika, you're doing the project on the biofuels. So can you tell me about the biofuels in India or The the biofuels, scenario of the this, biofuels in the India? so, this net zero carbon emissions is launched by our respected Prime Minister till 2050, and various petroleum sector are working on it. Various ethanol plant is being set up, like in IOCL Panipat, and various other oil PSUs are also coming up with this ethanol blending. Presently, there is only 20% ethanol blending is done in biofuel, so that we can reduce pollutions. Like if we will blend ethanol with our current petrol, it will reduce carbon dioxide emissions, NOx emissions also, and so they are switching on to ethanol blended petrol, so that import of crude oil should also be lessened. तो गाइस जितने भी लोग मेरे को और हम सभी को देख रहे हो तो उन सभी के लिए एक पहला हिंट जो यहाँ से आता है वो मैं हिंट आप सभी को देना चाहूंगा। एक्चुअली अगर आप सभी लोग जो भी यूट्यूब में लाइव देख रहे हो, जितने भी लोग नीति मुंबई का इंटरव्यू देने जाते हैं जनरली वो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले स्टूडेंट्स वो होते हैं जनरली जो फ्रेशर टाइप्स होते हैं, लाइक ऋषिका जैसे हमारे साथ में है। She is generally fresher because just she has completed her BTech and then after he completed the M.Tech also. एंड हमारे साथ अंकित और अगर रिया की अगर बात करते हैं तो ये दो जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे ऑल्सो हैव द वर्क एक्स, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो नीति मुंबई का जो है ना इंटरव्यू फेस करने जाते हैं। तो ऋषिका जैसे, तो ऋषिका के पास में कोई भी वर्क एक्स नहीं है, तो इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पुटअप किए जाने वाले हैं वो इसके पास जो भी प्रोजेक्ट्स इसने किए हैं वहां से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। अगर अंकित और रिया की अगर बात करेंगे तो इनसे जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाने वाले हैं, बिकॉज इनके पास वर्क एक्स है तो ऑलरेडी इनको एक मैनेजमेंट ऑपरेशंस एंड जितनी भी स्किल्स होती हैं एज अ एम्प्लॉय जो है ना, वो सारी की सारी स्किल्स ऑलरेडी इनको पता है, इन्होंने उस वर्क कल्चर के अंदर काम किया हुआ है। तो इनके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से होने वाले हैं, ये क्या और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है ना दे सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री को अपने स्किल्स के बिहाफ पे, और क्या चीज़ें ये ऐड कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के स्टूडेंट्स जनरली होते हैं। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आपके पास वर्क एक्स है तो आपको कैसे फोकस करना है, कैसे सामने वाले इंटरव्यूअर को मोल्ड करना है। अगर आपके पास में एज अ फ्रेशर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर कैसे आपको आंसर्स करने हैं। तो जनरली हम ये चीज़ डिफरेंशिएट करने का आपको ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज आपने अभी तक देखा होगा जो ऋषिका से क्वेश्चन किए गए जनरली वो सारे क्वेश्चन उसके एमटेक प्रोजेक्ट से या फिर जो भी उसने स्टडी किया वहाँ से थे। रिया से जो क्वेश्चंस किए गए या फिर अंकित से जो क्वेश्चंस किए गए जनरली वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो जनरली एक एम्प्लॉई से जो क्वेश्चंस किए जाते हैं एज अ वर्क एक्स के फॉर्म पे। ठीक है ना, तो तुलसी ये क्वेश्चंस थोड़े से और इलेबोरेट कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज अब जो भी क्वेश्चंस हम लोग पुटअप करेंगे तीनों से जनरली क्वेश्चन पुटअप करते हैं, फिर इनके पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि कैसे आंसर शुरू कर सकते हैं। Yes. तो वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द माई साइड ऑल्सो। एक्चुअली हम लोगों ने अभी देखा कि 2018 के अंदर में जो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ उससे एक्चुअली जितनी भी फिनटेक कंपनियां थी, फिनटेक कंपनियां आई थिंक यू विल ऑल अवेयर अबाउट द, so what was actually the losses for the fintech companies by the demonetization? First of all, Ankis, the impact of demonetization on the fintech companies. Sir, Your I point. don't have any idea about. क्या हुआ, समझ नहीं आया? No, sir, I don't have मैंने any ये idea. बोला कि जो भी हमारे पास में फिनटेक कंपनियां थी लाइक अमेजोन, गूगल पे, पेटीएम, उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ डिमोनेटाइजेशन का? जस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप रख सकते हो। रिया, Sir, your I point of view? feel, I think the economy was gone down at that time. So this had not, if not direct, then indirect effect was there on these companies. Also, the stock price of those company have gone down at that time. So this had a major impact on them.
in some or the other way. Okay, Rishika, your point of view? Yes. According to me, during demonetization, basically the current currencies all we are not using that, and then the whole load will came to bank and all the economics has also come down, and uh, it affects these companies a lot. Tulsi, any questions? So my point of view in this answer is like if you don't know the answer, you just politely say, "Sir, I'm not very sure about this all situations, so I'll definitely go and read about it." Because saying only like I don't know about it is very rude, and they will not think that you are a person who was curious to know things. Okay, and being बिकॉज मेरा ये कहना है कि जैसे ये क्वेश्चन था जो ये क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलरली क्या है सेक्टर से आप सभी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो एक क्वेश्चन था ये उस टाइम का या फिर हमारे अगर देखा जाए करंट टाइम में तो जितनी भी फिनटेक कंपनियां हैं वो आप सभी को पता है कि बहुत तेजी से ग्रो की हैं। और डिमोनेटाइजेशन के बाद में एक्चुअली बेनिफिट इनको मिला। रीजन क्या था? डिमोनेटाइजेशन के बाद जैसे करेंसी बैन हुई उस टाइम आदमी के पास में क्या था कि अकाउंट में तो पैसा था, लेकिन उसके पास में क्या है कि हार्ड कैश जो है ना कन्वर्ट कराने के लिए टाइम नहीं था। डेफिनेटली इन कंपनीज के थ्रू जो है ना उसका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ना उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला। और ऊपर से गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी ये कर दी है कि ट्राई टू यूज़ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मच एंड मच। तो वहाँ पर इन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। आप ऐसे आंसर कर सकते हो। वो आपसे ये नहीं जानना चाहता एक्चुअली, इसका कोई लॉजिक आंसर नहीं है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है कि इसका एक्यूरेट आंसर करना है। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या सोचते हो, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है अंकित? तो हमेशा ये ट्राई करो कि आपके लिए देखो नया कुछ होगा चीज़ें, बिकॉज आप जिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू देने जा रहे हो वहाँ पर वर्ल्ड क्लास जो है ना एंटरप्रेन्योर्स है ना वो डिज़ाइन किए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको जो है ना सॉरी बोलने का नौबत ना आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई ये करना है अपने को। ठीक है तुलसी, क्वेश्चन फ्रॉम द योर साइड। yes. So, as you all are from chemical engineering, I would like to ask the question like there is some changes and alteration in the oil prices. So, how this is affecting our economy? Can you like brief fluctuation in oil prices basically? Yeah, Rishika, you can go first. Yes. So, ma'am, due to oil prices, basically there are various alternatives also coming for petrol. Like I said, like biodiesel, ethanol blended petrol, and hydrogen energy is also evolving, and like uh, like some electrical. I'm not recapitulating it right now. Like all these sources are coming, so that oil reduction prices can be cut short, and import of crude oil can be decreased. So this is the point. Okay. अंकित, Yeah. योर Yeah. पॉइंट ऑफ व्यू? एक्चुअली हम सभी को पता है बिकॉज वी आर फ्रॉम द कंपनी बैकग्राउंड, एंड क्रूड या पेट्रोलियम का जो प्राइस है हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। और अगर देखा जाए हमारे लिए तो रॉ पर्टिकुलरली क्रूड का जो प्राइस है हमारे लिए और रिफाइनिंग सेक्शन होने के बाद में जो हमारा जो आपका ऑयल का प्राइस है, तो ये दोनों आपस में जो है ना बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो करंट टाइम जो सीन हमारे पास चल रहा है बिकॉज जब से यूक्रेन वॉर हमारा हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, तो इंडिया के ऊपर जो है ना मतलब कि ऑयल क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए काफ़ी सारे जो है ना प्रेशर जो है ना वो जनरेट हुए रशिया की तरफ से भी, बिकॉज इंडिया इज़ टू मच डिपेंड अपॉन द रशिया फॉर द परचेसिंग द क्रूड ऑयल। तो इस पर कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना रिया? Yes, sir. In addition to Rishika, I would like to say that it has impact on Indian economy, but India as a country is moving towards green energy, new fuel, new clean energy. Say, so it's focusing on hydrogen energy, it's focusing on solar energy, and wind energy, all the sustainable energies that we know. So India has a great impact on this, and by 2040 we are going to be zero carbon reduction, zero carbon emission country. So India as a whole has to focus more on these sustainable options rather than the crude ones.
All right. Ankish. Sir, I don't. कुछ कुछ तो सोच सकते हो पॉइंट. अच्छा, you are doing the job in the TCS. So what is तुरंत your... आपको नहीं आता, थोड़ा टाइम चाहिए होता है ये सब सोचने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. You are doing job your TCS. So को. what's your role and responsibilities at the TCS right now? Actually, sir, I am working in technology named Oracle Human Capital Management, Okay. and my role is DevOps, means developer. My role is like the HR activity. I used to configure the data, and it consists of various modules like compensation, payroll, talent performance, and help desk module. In compensation module, I used to monitor the client which I am working under that. I am monitoring the appraisal of each and every employer, how they are how they are performing their role in that company. And I used to give band according to that. Means someone has performed outstanding, then I will give them A band. Someone has I used to calculate using formula how to give that appraisal. And in HR module, I used to in helpdesk module, I used to give access to the client. Manager access has to give it to manager, and the employee access and the client access has to give it to client access. And in security module, I used to monitor whether one access has not hacked or not. So like that, I work. Okay. So Ankit, there is one question. So in your point of view, which one plays the most important role in that particular organization, which are you doing your job in the TCS? So which one is most important? That is the manager or the team? Which plays the most important role? Both are related to each other, How? without manager or without team. Because if team does not work in a group, then we can't able to growth in our company, and manager also can't do his work. All right, Ankish, can you tell any one of your achievements in your work experience? Actually, I have on 1 year. I have worked only 1 year. That's why. But any value additions or like any new development you have done in your work or any new initiative you have taken, any you can mention it. In some time, I used to avoid the SLA breach. Means I used to assign the tickets. If I don't assign the tickets, then it cannot work for that company in a particular time. If I don't assign the ticket, then that will issue in that company. So I used to save that. All right. So, or are you guys are shortlisted for SM program also? Yes, sir. Yes, Only PGDI. Only both. PG. Riya, you are for SM also, Yes. and Rishika, you also. So, can you tell me about what is triple bottom line or like what? No, I have no idea right now, but I'll go through. So, before going to interview, just Okay. make sure you know about some sustainability terms like 17 sustainable goals are there, like Yeah. SDG goals that you should, I think, go through it a little bit of. Mm. One or two you can remember also, and also triple bottom line. And for sustainability, one meet was there, like some summits are G20 summits as 20 in, summit. yeah. So just make sure you know a little bit about it, I think. And this is fine. So in G20 summit, what are the main points we need to know? Agenda, theme, and more. What? Basically, agenda and what are the commitments India has done to that. Yes. Okay. So these all things you can mention over there if they. And they will be definitely asking about your preference. Like there will be only one interview for IA and SM.
So they may ask you about what is your preference. You want to join SM course or SM program or IE program. So you just tell them like which is your preference and why, right? Make sure you are ready with this answer. Okay. तो Okay. तुलसी So और कुछ now, इनको हम लोग हिंट दे सकते हैं बिकॉज थोड़ा सा जो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि रिया इज ऑल्सो डूइंग great answers and the Rishika is also doing the great answers, but Ankis, you have to something, you have to do some work on your work profile as well as for your answers also, because ये कॉमन क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा ही नहीं है। तो कॉमन क्वेश्चन ये पहली बात तो ये आता है कि रिया यू आर डूइंग द ऑपरेशन जॉब, देन व्हाई यू आर चूजिंग द दैट पर्टिकुलरली एमबीए पार्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन तुलसी ने पुट अप किया था। If you are doing the operations job, then why are you choosing yes. that particularly management part, or Hmm. why are you choosing that particularly management stream? तो इसका क्या बेनिफिट आप लेना चाहते हो, ठीक है ना। एंड ऋषिका, जैसा कि आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर्स के लिए जनरली आपसे बोला जा सकता है कि देन डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट कॉलेज से मिला या फिर नहीं मिला एमटेक में, बिकॉज आईटी कानपुर में देयर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गेट इनटू द प्लेसमेंट। so if you are not get selected in the placement, then why you should join for the that particularly management stream, and what are the actually your skills that will be get benefited for the NITIE Mumbai। तो इस तरह क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। और जैसे अंकित आपने 2 बार आई थिंक गेट प्रिपरेशन किया है, 2 टाइम्स किया है ना, Yes, sir. तो आपके लिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 2 साल प्रिपरेशन करने के बाद वाई यू हैव ज्वाइन फॉर द TCS। ये क्वेश्चन तुमसे पुटअप हो सकता है। Yes, sir. और यहाँ पर आपको अगर आप ये आंसर करते हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, देन आई हैव मूव फॉर द TCS, तो उनको फिर ये लगेगा कि चलो ठीक है TCS तो आपने मजबूरी में ज्वाइन कर लिया, देन वाई नाउ यू आर ज्वाइन फॉर द NITIE मुंबई। तो आपको ये चीज़ मतलब कि उनको समझाना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा कि एक्चुअली NITIE मुंबई आप ज्वाइन कर रहे हो, तो वो ये एक्चुअली जानना चाहते हैं, बिकॉज उनका जो मेन मोटो होता है NITIE मुंबई के अंदर में, वो ये रहता है कि एक्चुअली आप इंटरेस्टेड हो, डेडिकेटली इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि जस्ट यू विल जॉइन द NITIE मुंबई एंड आफ्टर द 1 year 2 year अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये एक आपके लिए जो है ना बहुत बड़ा टास्क रहता है वहाँ पर। तुलसी, आई एम राइट? Yes. So actually, I have another commitments also. So I'll just give you some instructions before interview what you should do. या डेफिनेटली। So first of all, like first impression is like most important. So make sure you are properly dressed. You have one pen and a copy with you. So any kind of formulation, and also you make sure that you have proper eye contact when you are in front of web camera, and your background should be clean. And these are like some personality traits. And if something you want to explain, you can show your hand movements as well. There is no restriction on that. So, and after this, when you are answering the questions, so most important question is your introduction part. So what I observed in your introduction part is like you are giving is too long introduction and you are not well prepared for it. So make sure your introduction is in very structured manner. Don't need to like put you have gap, you are not selected there and here, because they are not interested in your struggle, they are just interested in your achievements. If they want to know about your struggle, they will definitely ask about it, right? And structure, it means like you should have proper chronology, and best chronology is like reverse chronology. Like in my case, if I'll start my introduction, then I'll start like this, like my name is Tulsi Patle, I belong from Balaghat, Madhya Pradesh. I'm currently doing my summer internship at Essential Strategy and Consulting, and also simultaneously I'm studying at NITIE Mumbai. Before that, I was working with L&T Energy Hydrocarbon as business development sales executive, where my key responsibilities was this and this. And then about my graduation, that is like I completed my BTech from National Institute of Technology Rourkela in chemical engineering, and some achievements if you want to mention, and then hobby. This should be your proper structure. Okay, so if there is a structure, then you don't forget things in your introduction part. Second thing is like it looks like you are an organized person and you know well yourself, right? Which And means I apart think from there that, is no need to tell the your 10th or 12th schooling or the percentage, because it's yeah, a master's program and there is no need of to telling the particular percentage or schooling. Okay. tell them something which in from which they can ask question. Means you can drive your interview, right? Yeah. So if you tell something interesting, they will be definitely asking questions from it.
Like for my case, they ask questions from my hobbies. They ask some questions from my startups. So these kind of things you need to do. You need to give them some catchy points so they can ask you questions and be prepared with that catchy point. Like in your case, Rishika, is biofuel is I think very interesting topic. So Yes. you should definitely mention it in your introduction, and then they will be like moving forward with that. And apart from that, first maintain a little bit of smile in your face. Second thing is that be confident whatever you are saying. If you don't know something, deny it politely, like no sir, I am not very sure about this answer, I'll definitely go and read about it. So it means that it shows that you are eager to learn things, okay, even though you don't know. So this is the way you should do, and at the end just say thank you and why before, if they tell you to properly leave the meeting, then only leave. Because Okay, actually it's an online interview और इतना हड़बड़ाना मत, मतलब नर्वस मत होना, वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है वो, एक्चुअली अभी उनको लगता है पिछले कि 45 मिनट के अंदर कॉन्फिडेंस। आपने तुलसी को देखा होगा कि द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप लोगों ने जब इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा मतलब कि एनर्जी का लेवल लो या फिर लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस है ना वो थोड़ा सा शो हुआ। तो वो चीज़ जो है ना प्रॉपर्ली थोड़ा सा फेस पर आनी चाहिए। एक देखो एक चीज़ हमेशा बोला जाता है किसी भी इंटरव्यू के अंदर सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। बिकॉज जो भी आपने लाइफ के अंदर किया है यू आर जस्ट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ मेंशन मत करना और जितना भी आंसर करना कॉन्फिडेंस साथ में करना। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है जैसे कि हमेशा आप लोग बोलते ही हैं कि इंटरव्यू के अंदर उनको वो पॉइंट्स दो ना जहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकें। किसी भी इंटरव्यू के अंदर होता है, आप बार्क में जाइए, एनपीसीआई जाओ, पीएसयू जाओ, उनको वो पॉइंट्स दो जहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकें। तो कभी कभी टेक्निकल के अंदर जो फ्रेशर्स होते हैं, बिकॉज आप में से ऐसा कोई ये नहीं है जो बीटेक करने के बाद जस्ट जा रहा होता है, तो उससे वो क्वेश्चन जो है ना कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि व्हाट आर टेल द सम 3 और मोर फेवरेट सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो वो आपसे पूछ सकते हैं, पूछते हैं कभी कभी कि रिएक्टर का मॉडलिंग या डिजाइन करके बताइए जरा। ऐसा भी पूछ सकते हैं, नो डाउट। लेकिन आप में से कोई ऐसा है नहीं जिससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकें। ठीक है ना, तो और अपने जितने पॉइंट्स आपको रखने हैं तो ये ट्राई करो कि ज़्यादा लंबा ना हो, वो बोर ना हो। बिकॉज 15 से 20 मिनट हार्डली आपका इंटरव्यू चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला। तो 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ना आप उनको सेटिस्फाई कर सको और आपके फेस में भी एक स्माइल हो और उनके फेस में भी स्माइल हो जब आप उनको गुड बाय या थैंक यू बोलो। तो एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अभी आज मैंने इंटरेक्शन इसीलिए तुलसी के साथ में कराया था, रीज़न ये ऑलरेडी उसने सब फेस किया हुआ है एंड शी इज़ ऑल्सो अ काम का इंजीनियर। तो आपके अंदर भी एक चीज़ कॉन्फिडेंस ये आएगा कि एक्चुअली इफ शी कैन डू देन यू ऑल ऑफ यू कैन आल्सो डू। ठीक है ना, तो ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अंकित तुम्हारा टीचर्स बैकग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त तरीके से आंसर करोगे अगर कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है ना, वो भी आपको लेंगे। जो तुलसी ने जॉब प्रोफाइल उसका था एल कार्बन के अंदर में, तो उसका ऑपरेशन का नहीं था, उसका भी मैनेजमेंट का ही था, लेकिन उसका बेनिफिट उसको उसके इंटरव्यू में मिला था। ठीक है ना, रिया आपके पास बहुत अच्छा प्रोफाइल है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इतना ध्यान रखो कि जनरली वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी सेलेक्ट किए हैं जहाँ तक मेरे को पता है, वो या तो बहुत अच्छे कोई भी उनका प्रोजेक्ट रहा है या फिर जनरली क्या है कि वो बहुत उनके पास में क्या है वर्क एक्स है, ऐसे लोगों को ही सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ। और ये भी ध्यान रखना है कि यू आर अ काम का इंजीनियर और आपकी पर्टिकुलरली इस एडमिशन के लिए पीजीडीआई के लिए एसएम के लिए केमिकल के साथ मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे होने वाले हैं। तो आपके अंदर एक्चुअली क्या स्पेशल है ये उनको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो दैट्स द माय पॉइंट। ओके, बाकी मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ आप सभी को सेंड कर दूंगा, मेरे को बता देना। मैं क्वेश्चंस की एक पीडीएफ आप सबको सेंड कर दूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाएगा तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आपके कोई क्वेश्चन हो लास्ट में तो पूछ सकते हो तुलसी से, जस्ट लीव करने से पहले। सर करंट अफेयर्स के लिए कुछ पढ़ना है इम्पोर्टेंट? देखो कब है तुम्हारा इंटरव्यू, इस पे डिपेंड करता है। अगर टाइम है तो पढ़ लो, बट इफ यू डोंट नो समथिंग देन दैट्स आल्सो फाइन, बट यू जस्ट नीड टू वेरी श्योर दैट यू डोंट नो दिस, यू विल रीड अबाउट। ओके। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, क्योंकि वो भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि यू नो एवरीथिंग। यूपीएससी का इंटरव्यू तो नहीं है कि मतलब सब कुछ आता हो। यस, ठीक है। तो गाइज ये वी आर मूविंग फॉर द कंक्लूजन और होपफुली आप सभी को एक बेसिक आइडिया, रफ आइडिया मिल चुका होगा कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो रदर देन सेइंग सॉरी, इट्स इम्पोर्टेंट टू जस्ट टेल समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वॉट एवर यू नो एंड वॉट एवर योर कॉमन सेंस एक्चुअली टोल्ड यू टू टेल दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो सॉरी कहने से अच्छा ये कुछ तो कम से कम बताइए उनको, जितना भी आपको आइडिया है, जो भी आप सोचते हो उस पॉइंट के बारे में। टेक्निकल क्वेश्चंस है नहीं है। तो चलिए इस पर्टिकुलर सेशन को आज कंक्लूड करते हैं।
और होपफुली जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए उनको एक रफ आइडिया मिला होगा। बाकी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए आप हमारे साथ इन फ्यूचर भी कनेक्ट करते रहेंगे। तो अभी आपके NPCL और बार के इंटरव्यूज आने वाले हैं, देन उसके बाद आपके जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स के इंटरव्यूज होंगे, तो उसके लिए भी हम लोग इस तरह से पैनल डिस्कशन लेते रहेंगे, मॉक इंटरव्यूज लेते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और आज के सेशन के अंदर में जो भी अगर मेरे साथ अगर फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा है, तो जस्ट मैं उनको एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि माई सेल्फ सुमित प्रजापति, फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, and I'm completing the fluid mechanics heat transfer operation, process and control, chemical technology and mechanical operation for the purpose of GATE 24 and 25. एंड फॉर जो भी एज स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए थे, देन डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। एंड इस ऐप के थ्रू जो है ना, जितनी भी आपकी फ्री क्लासेस हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं, एज वेल एज आपके जो प्लस कोर्सेज हैं आप उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। और इन फ्यूचर आपके लिए जो है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ना अभी ओपन होकर के आने वाली हैं। एक अपॉर्चुनिटी आपकी आज भी ओपन हुई है, एक अपॉर्चुनिटी मैंने कल भी आपको बताई थी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में जो पोस्ट आई हैं। एंड आज जो अपॉर्चुनिटी आपकी ओपन हुई है, दैट इज BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर भी आपके पास जो है ना केमिकल की पोस्ट नहीं है, 2 साल से पिछली केमिकल की पोस्ट नहीं आ रही है, बट इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस अभी आपको इन फ्यूचर भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। सो गेट कनेक्ट विद मी। और फिर मैकेनिक्स जो आपका चल रहा है प्लस एन आइकॉनिक बैच के अंदर में, तो इसको आप मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। डेली 7 PM आपका इसका लेक्चर हो रहा है। कल से मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और ये रिक्रूटमेंट का मैंने कल नोटिफिकेशन आपको बता चुका हूँ, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में टोटल पोस्ट 4374 पोस्ट आपकी जो है ना रिलीज की गई हैं। और 5 सब्जेक्ट्स मेरे हैं, 5 सब्जेक्ट सैलेंसर के हैं, 10 सब्जेक्ट्स हम दोनों मिलकर के फिनिश कर रहे हैं फॉर द GATE 24। और इसके साथ साथ जो भी प्लस के साथ मूव करना चाहता है, तो अभी आपके पास में कल भर का टाइम और है। 24th इज द लास्ट डेट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफर, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द 32% डायरेक्ट ऑफ इन द 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। प्लस एंड आइकॉनिक में आपको जो है ना कुछ मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, 12+3 एंड 24+4। तो अगर आप मूव करना चाहते हो तो मेरे कोड के साथ मूव कर सकते हो, और बहुत कुछ जो है ना इन फ्यूचर आपको मेरे थ्रू जो है ना गाइडेंस मिलता रहेगा, ठीक है। और अभी आपके लिए 28 अप्रैल से न्यू बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 9 PM पर नया सब्जेक्ट आपको मिल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। एंड एक्चुअली हमारे पास में 9 PM पर साइलेंसर का CRA भी आपको मिल रहा है। एंड मेरा सब्जेक्ट फॉर मैकेनिक्स एंड मास ट्रांसफर ऑपरेशन भी आप अभी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। और जितने भी PSUs के रिक्रूटमेंट्स ओपन होकर के आ रहे हैं, आपके पास ये लिस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ से इस लिस्ट के थ्रू जो है ना प्रॉपर आप मूव कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर PSU को अपडेट लेने के लिए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और बाकी इन फ्यूचर जितने भी कनेक्शंस होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तुलसी फॉर गिविंग अस द प्रीशियस टाइम, एंड अंकित, Riya and Rishika, all of you. First of all, congratulations and best of luck for your interviews. Thank you, sir.